So what are the different levels of testing? In V model, we have discussed one left arm shows verification. So that is a SDLC, and right arm shows verification. Sorry, validation. So validation means different levels of testing we can see. Where we can, first is the unit testing. So we can go through the agenda, what we are going to cover in this. So here we are going to see V models we will discuss again, and then the levels of testing: unit testing, component testing, integration testing, system testing, and last one is acceptance testing. So what are the different approaches we use during integration? Integration matlab you can integrate two modules or you can integrate two systems together to see the end-to-end results. जैसे आपको टिकट बुक करना है, तो टिकट बुक करना, you can log in is the one thing, booking is the second thing, and third is dispatching the ticket or confirmation and send an email. So that is end-to-end flow. So इसमें एक ही सिस्टम में ईमेल जाता है क्या? नहीं, ईमेल के लिए अलग सिस्टम लगता है. So you have to integrate those things together. And what approach you are doing that? So we can see that integration approaches. So there are top down, bottom up, then critical part first, and then big bang. So these are the different approaches, test approaches for integration testing. So we are going to cover these things in levels of testing. This module, actually, this is the fourth module we are going to cover, and we will start with this V model. We will quickly revisit because it is a very important point for others as well. So if you see, as I mentioned, V model represents the different phases of software development lifecycle, right? So there are two arms. As V denotes, we can see there are two arms, left and right. So one arm, left arm, that denotes the verification process, whereas right arm, so that is STLC, means validation phases, because you actually evaluate the code, you execute the code and see the result. Okay. Sorry. Each phase on the right arm, that denotes the different types of testing and which coincide with each of the verification process on the left arm. So we have discussed this part as well. So unit testing, so you refer the coding phase of left arm. Then we can see one by one here. We have that diagram in front of us. So if you see here, sorry. So first arm, coding. So here, sorry, I can't do this. So this is the V model, we can say, developer's life cycle, SDLC, verification, whereas validation, tester's life cycle. So here code is the common point, right? So you start with this, you come to the end of this. So coding is the end of developer's life cycle, whereas this code is the starting point for tester's life cycle. So in coding, you can do developers complete the development activity and then start the unit testing. So once the code is ready, developer will start unit testing. Okay, so that is first phase of STLC or right arm. So first level of testing is unit testing. And who performs that? Developer. Correct. Why, we can see that later. But see the relationships or how we can start and at what point we can start that level of testing. Okay. So here coding is done, code is ready, then you developer can do unit testing. So once unit testing is done, then you can start component testing. Component testing is done by developers as well as testers, both, because here you need
some coding, some development concept, so how they have done that. So what kind of activity you have to perform. So you need some information from developers and you can perform the testing. So here you both, they can generally developers perform, but if tester have that knowledge, then tester can also perform that component testing. And it depends on low level design, because in low level design, we can generate components, modules. We can decide. So which module we will build and how we will proceed with. So that it is defined here. And approach of integration is also decided, and based on that components are designed. Means if it is a top-down approach, so the top modules are developed on priority. Bottom-up approach, then bottom modules are developed. We can discuss that later in today's session only. But here, once you are done with unit testing, you can refer the low-level design and you can perform the component testing. Once component testing is done, you can go ahead and perform system integration testing. Then you can consider all the modules and develop the system integration, perform the system integration testing. And here you can refer high-level design. Okay. So after high-level design, referring to this, what is the next thing? You need to check overall performance of the system, how the system is behaving. So in that, you can refer the system requirement specification to check the system testing. Okay. So after system integration testing, you can perform the system testing. Means once everything is in place, you can start the system testing. After system testing, you can perform acceptance testing. And in acceptance testing, you can consider real-time business scenarios. And so business requirement specification is a reference document for acceptance testing. And after system testing, you can do this. Okay. इसमें कुछ doubt है? मैम यूनिट टेस्टिंग एंड कंपोनेंट टेस्टिंग का आप कुछ एग्जांपल बता सकते हो क्या? मींस कैसे रहेगा? हाँ रहेगा, करते हैं, अभी इधर आगे है, बट ये डायग्राम में कुछ डिफरेंट मींस कंफ्यूजन है क्या? नो मैम। ये डायग्राम क्यों रेफर करना है? तो करस्पॉन्डिंग फेजेस एक के लिए क्या क्या है वो याद रखना है आपको. यूनिट टेस्टिंग के लिए क्या कोडिंग है, कोडिंग. कंपोनेंट टेस्टिंग के लिए लो लेवल डिजाइन. सिस्टम इंटीग्रेशन के लिए हाई लेवल डिजाइन. सिस्टम टेस्टिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के लिए बिजनेस रिक्वायरमेंट. सो ये आगे मैं बताती हूँ, एक सारा यूनिट हर एक का एग्जांपल भी बताती हूँ. So these are the 5 levels of testing. Correct? So we'll see one by one. Unit testing. Unit means small piece of code basically. And this is the basic level of testing. This first level of testing we can say. First means I write something so I can verify. Self-testing. Basically, the developer writes a code and verifies that it is working as per the requirement. So developer performs testing of his own unit of code. मतलब एक कौन सा सिस्टम लेते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग का एक एग्जांपल सिस्टम है. हाँ, ऑनलाइन शॉपिंग के इसमें आई हैव टू राइट लॉगिन मॉड्यूल एक को दिया डेवलपमेंट करने के लिए. देन सर्च एंड ऐड टू कार्ट, ये फंक्शनैलिटी जो प्रोडक्ट दिखाई देंगे उसमें से यू कैन सर्च अ प्रोडक्ट एंड ऐड दैट प्रोडक्ट टू योर कार्ट. करेक्ट? ये एक दूसरे को दिया. प्रिंट बिल, ये तीसरे को दिया. एंड फोर्थ वन इज पेमेंट एंड लॉग आउट. सो लॉग इन एंड जिसको एक लॉग आउट को दिया. ऐसे 4 बंदे हैं, वो 4 लोगों को 4 यूनिट्स डेवलप, 4 मॉड्यूल्स डेवलप करने को दिया. इन लॉगिन ऑल्सो I have to validate username, password, and all the things, right? User ID, password जो भी रहेगा वो verify करके आपको लिखना है. So what you will do?
I can write in a one day or some smaller amount of time you have to complete that. Then what you will do? You can do a validation for user ID field. Pooja will do validation for password field. I'll do whether this is correct as per, and if when I click on a login, whether this get registered and able to log in. Means I can check that. Means only registered users can access the site and then proceed further for the shopping. So here, what I have done, small part I have done, and I combine these things together and perform that activity. Means registration is a one thing, validation is a one thing, and then login with the everything. So this login module consists of small units, right? So first unit is registration. Registration also personal information. Then verification of personal information. अभी आजकल तो आधार कार्ड के accordingly verification हो जाता है. You can connect to Aadhaar card system and verify that person's information is valid or not. Otherwise, you can get some fake registrations also. So here, unit testing is a single unit of code which run independently, and you can verify, you can check the functionality of that small unit of code is working as expected. So here, what you can do, what is the primary goal of unit testing? So primary goal is to isolate the smallest unit of code from the overall system or overall system of the overall software and determine whether it behaves correctly or not. मतलब एक एग्जाम्पल बताना है तो मैं बताती हूँ कि खाना बनाना है, right? Everybody eats food, right? लंच करते हो ना? लंच किया ना सबने? लंच किया ना? तो लंच करते समय अगर आपको पूरा लंच is your overall system, we can see. And unit testing जैसे कंसिडर करना है तो I can cook roti is one unit, sabji is 1 unit, dal is 1 unit, chawal is another unit, and if required you can add some other ingredients, other things as well. Buttermilk हो गया, sweet dish हो गया, कुछ जो भी चाहिए आपको वो डाल सकते हैं. So that is another modules. But what is the main system? Main system contains dal, chawal, roti, sabji, and salad. But these are the main components of the lunch. So एक unit अगर consider करना है तो you can check दाल बनाई अच्छी बनी, you can test it and say that it is हो गई अच्छी से बनी. चावल हर एक का यूनिट टेस्टिंग करना जरूरी है, राइट? नहीं तो क्या होगा? ओवरऑल लंच खराब होगा, राइट? होगा ना? No, ma'am. No? How can you tell me? मैम हर एक को मतलब हर एक को क्यों जरूरत है करने का? हाँ, एक सिस्टम है, उसमें से सारे ये इंग्रेडिएंट्स हैं, करेक्ट? तो अगर एक अच्छा नहीं है, सब्जी अच्छी नहीं है, तो कैन यू ईट एवरीथिंग? नहीं. तो मतलब कर सकते हो. देयर इज अ ऑप्शनल वे यू कैन वर्क अराउंड. मतलब यू कैन हैव dal and you can eat instead of sabji, you can eat that. But this is a workaround. Is that a proper way to do that activity? No. So simple thing है ये, हमारा day to day example है. अगर we see that same thing in our application or system, then even you can notice that if that is not working properly, then you have to do other alternative arrangements and which may take a bigger time. अगर एक दो लोग हैं तो you can adjust, but अगर 10 लोग हैं खाना खाने के लिए तो दाल कम पड़ेगी ना फिर, करेक्ट? Yes, ma'am. So ये जो थिंग है यूनिट टेस्टिंग, मतलब हर एक पीस जो है इट शुड फंक्शन प्रॉपरली एज एक्सपेक्टेड.
कौन सा भी चीज हो, राइट. सो जो यूनिट है स्मॉल स्मॉल पीस है, दैट शुड बिहेव एग्जैक्टली व्हाट इज एज पर देयर एक्सपेक्टेशन. मतलब a प्लस ए इज इक्वल टू a प्लस बी इक्वल टू जो भी आंसर है c. सो a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 10, तो आंसर मेरा एक्सपेक्टेड है 10 plus 10 is 20. There should not be 10 plus 10 is 10. This is not working as expected, right? So there is some problem, we can say. That means unit testing is not done properly. So you can see, ask developer that can you please check that and see the results. So here, have you understood this part correctly or not? Yes, ma'am, understood. So if the basic thing is not working correctly, then जैसा घर बनाना है तो घर के लिए जो स्मॉल बेसिक थिंग मटेरियल है वो ही अच्छा नहीं है तो घर अच्छा नहीं बनेगा. सेम थिंग अप्लाइज हियर. स्मॉल स्मॉल पीसेस ऑफ कोड is not written correctly, then the overall system will not work correctly. So here the testing, the primary goal is to isolate the smallest unit of code from the remainder of the software or remainder of the application, and it should behave exactly as you expect. मतलब उसका requirement जो है उसके accordingly work होना चाहिए. That is what we expect. This testing coincides with the development phase in the V model. जैसे हमने देखा था कि coding phase is nothing but a development phase. So this unit testing is related to the coding. जैसे कोड लिखा है वैसे वो यहाँ पे टेस्ट होना चाहिए. The common approach of unit testing is to write drivers or stuff, because the overall whole functionality is not written, because this is a small unit. So you have to test it with other alternative arrangements here. So you have to write drivers. Drivers means you can write a small piece of code and you can check that. जैसे आपको सब्जी टेस्ट करना है तो खाली सब्जी टेस्ट करना, that is a different thing. And रोटी के साथ टेस्ट करना, रोटी नहीं है तो what you can do? You can get a bread, test it. You can get a bhakri, you can test it. So there is an alternative arrangement you have made for the see the output. So here you can write a drivers and stubs. You can understand those things. This, what is a driver, what is a stub? We can consider that in the integration approaches. Till that time, you can remember that for unit testing, we can write these drivers and stubs and we can test it. Alternative arrangement. So this is a small piece of code we can write and test it, basically. Okay? So units means small pieces of puzzles, we can say. Here you can see that it looks like a puzzle pieces. And if you combine these small units, it generates one component. So here you can see component testing. So here you can see these are the units, what you have seen in the first diagram. So these small units integrate together and generates one component or module. This is the second level. In the diagram, if you see, once unit testing is done, you can go with the component testing. So small unit combined together and this generates module or component and you can test that. So this is the second level of testing, where individual components or modules are tested. Means I can register myself and with the help of that registered user, I can log in. So that is, we can see. So it is performed by testing team to verify that different functional modules are working independently, working fine independently. मतलब जो हमने डेवलपर ने लिखा है, कोड लिखा है, वो tester can test it with the help of various scenarios, positive, negative, correct output देना चाहिए. मतलब if I enter a valid user ID password, login होना चाहिए. Invalid है तो error देना चाहिए. कुछ गलत डाला तो भी मतलब it should not allow you with invalid details, basically. The scope is larger than the unit testing.
but it's limited to a particular function or unit of the entire system. And the primary goal is to have a deep dive testing done at each functional area of the entire application. Deep dive matlab in detail testing of that particular component. Matlab all positive, negative scenarios. Agar if you want to break the system, you can break, but here all thorough testing has to be done. The component test planning starts at the with the start of the low level design. So ये कब start करते हैं? जब low level design में हम लोग low level design का diagram बनाते हैं, क्या क्या बनाना है, क्या क्या करना है. So we can mention the we can create the design, and in that design we can create what are the modules, what are the different components, how we can integrate that. So that kind of information is mentioned in the low level design, and that low level design we can refer for component testing. So here if we consider an example, login करना है. या फिर खाना खाने का ही एग्जांपल लंच का लेना है, तो इन लंच यू कैन हैव दाल एंड चावल. सो व्हेन यू consider both dal and chawal together, it should work or it should test correctly. So there should be perfect salt, there should be perfect spices, everything should be perfect, then only that test better, right? दाल में नमक ही नहीं है, तो चावल खाते समय if you want to make it perfect, you have to add extra things, right? सब्जी, रोटी सब्जी खानी है, तो रोटी के साथ जो सब्जी खा रहे हो, सब्जी में अगर ज्यादा नमक है, तो can you eat that? No, ma'am. So you have to proportion of everything should be perfect. जो रोटी खा रहे हो, रोटी में भी बहुत नमक डाल दिया तो नहीं खा सकते, right? So if these two things should, this is a component testing. मतलब इसके साथ भी ये अच्छा रिजल्ट देना चाहिए, उसके साथ भी ये अच्छा रिजल्ट देना चाहिए, and overall the output of that component should be perfect. And if you consider the system in online shopping, if you consider login is a one component, right? Second is registration and login is the one component, means login functionality. Search and add a product to the cart, so that is another thing. So if you log in with your user ID and if you are searching with the product and adding that product to cart, so that product will go to the registered or logged in user's cart, not any other user's cart. So here this is the integration and this is the components you are testing independently. You can combine these two components and do integration testing. ये इतना समझा क्या? Component मतलब एक एक unit, multiple units create one component. ठीक है? Can we proceed further? Yes, ma'am. Then the next is integration testing. So here there are two types of integration. One is a component integration and another is a system integration. So what is meant by integration? This is the third level. First is a unit, second is a component, and third is a integration. Third level of integration, third level of testing, sorry, and which is integration testing. So you can integrate different modules or different components together to see the system's behavior. Or it allows you to integrate two components and see the behavior. Like I told you that dal chawal, so this combination, then roti sabji, this combination, so they should work correctly, and if they work correctly, then you can have overall lunch or dinner perfect, we can say, right? So here if you consider the example of application, so online shopping application, so user you can register a user, log in with that user,
search a product after login, and then verify that the logged in user searches and add that product to his own cart, his or her own cart, right? तुम्हारे बैग में ही तुम्हारे ही जाना है, दूसरे के बैग में जाके फायदा है क्या कुछ? नहीं. So here we have two types of integration testing. One is a component and second is a system integration. So components means two or more components can be integrated together, right? And you can test that integration. Okay. So that is a one approach, component integration testing. And the second approach is a system integration testing, whereas you can combine some modules of the system as well as some external devices or external systems, and then you can perform that system integration testing. Like you want to test printer. If you can add that printer to the system, I can add the product, I can do the search, and then in the end, I want to print a bill. So here, everything, login se leke printing tak you are doing system testing. So there are multiple components you are integrating together, as well as some external things you are adding together and you are verifying. Correct? So if you see the computer system, in that also there are multiple components you are integrating: keyboard, monitor, mouse. So basic these three things you are integrating together and verifying the behavior, right? Uske saath you can add a printer also. So that is an external device which is required or not required. That depends on use of the computer. So अगर आपके पास print का function है, print कुछ करके देखना है आपको, then only that is required. Otherwise, is it not required? Correct? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नीरज, स्वप्नाली, यस मैम। हाँ समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। क्या क्या नहीं, थोड़ा थोड़ा मतलब क्या समझा और क्या नहीं समझा? क्या नहीं समझा वो बताओ, क्या समझा वो बाजू में रहने दो, जो नहीं समझा वो बताओ, मैं मतलब एक्सप्लेन करती हूँ वापस। मैम ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बारे में कुछ फिर से मतलब उसका ये होता है। हाँ ठीक है, इंटीग्रेशन मतलब क्या, वर्ड का मतलब क्या है? यू कैन ज्वाइन टू थिंग्स टुगेदर, राइट? सो इसमें कंपोनेंट मतलब मॉड्यूल्स है। सो दो मॉड्यूल्स एक साथ ज्वाइन करना है आप, तो कैसे करोगे? मतलब यहां से वैल्यू उधर पास करना है एंड फिर वहां से चेक करना है, राइट? कुछ तो वे होना चाहिए ना, उधर यहाँ से वैल्यू पास होती है उधर, तो पास होने के लिए भी कुछ तो ऑप्शंस चाहिए ना। तो ये ऑप्शंस हमें इंटीग्रेट करके डेवलप करने, मतलब मैंने लॉगिन करना है, लॉगिन करके वही यूजर से बाकी सारा एक्टिविटी करना है। सो लॉगिन करते समय मैंने मेरे यूजर आईडी से लॉगिन किया, स्वाति पुरोहित ये मेरा लॉगिन है। सो मैंने उससे लॉगिन किया। लॉगिन होने के बाद मुझे सर्च करना है, कुछ ऐड करना है मेरे कार्ट में, तो मैंने सर्च किया, मुझे पेन चाहिए, मैंने पेन सर्च किया, पेन ऐड किया। ऐड करने के बाद वो कार्ट ऐड टू कार्ट किया, बराबर? सो ऐड टू कार्ट इज अनदर फंक्शनैलिटी, अनदर मॉड्यूल, अनदर कंपोनेंट। उसके बाद बिल जनरेट होगा, बिल जनरेट होने के बाद बिल प्रिंट होगा, प्रिंट होके वो डिस्पैच होगा। सो ये ओवरऑल अदर कंपोनेंट्स है। सो ये कंपोनेंट्स एंड टू एंड फ्लो देखना है तो यू हैव टू चेक ऑल द फ्लोज, राइट? ये सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग आपको देखना है तो ओवरऑल सारे फ्लोज आपको चेक करने पड़ेंगे। अगर खाली इंटीग्रेशन, कंपोनेंट इंटीग्रेशन देखना है तो लॉगिन हो रहा है ये यूजर से, दैट इज गुड। ये यूजर से मैंने सर्च किया,
वो सर्च होके ऐड हो रहा है कार्ट में, करेक्ट। सो ये 2 मॉड्यूल्स चल रहे हैं, उन दोनों का इंटीग्रेशन टेस्टिंग चल रहा है, करेक्ट, करेक्ट, समझा? समझा कि नहीं समझा अभी, या अभी डाउट है कुछ? समझ गया मैं। बाकी लोगों को समझ रहा है या नहीं समझ रहा है? पूजा? Yes, ma'am. सो हियर दिस इज द मेन सिस्टम, यू हैव टू चेक। हमने रिजर्वेशन किया है, पेटीएम से पे करते हो ना आप, पेटीएम जीपे करते हो ना सब लोग? Yes, ma'am. हाँ। यस मैम। वहां पे स्कैन करना, यू हैव रजिस्टर्ड योर सेल्फ एज अ वैलिड यूजर, आपने अकाउंट खोल दिया, रजिस्ट्रेशन किया, सो दैट इज द फर्स्ट मॉड्यूल। उसके बाद स्कैन करते हो, वो क्यूआर कोड देते हैं, वो क्यूआर कोड स्कैन करके यू डू द पेमेंट। सो उस पेमेंट में बैंक के तरफ से पैसा जाता है, सो ये अदर एक्टिविटीज भी होते हैं उसमें, एंड देन पेमेंट जाने के बाद वो दूसरे अकाउंट में जो जिसका क्यूआर कोड था उसके अकाउंट में जाके डिपॉजिट होते हैं, राइट, उसको मिलते हैं, तो आपको मैसेज भी आता है। सो ये इंटीग्रेशन है सारा। सो ये इंटीग्रेशन होने के बाद आपको पता चलता है कि यू हैव डन द फ्लो करेक्टली, मतलब स्कैनिंग, देन गिविंग। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है उतना एंड आपने स्कैन करके पैसा भेज दिया, तो पहले ही दिखा था कि बैलेंस नहीं है, बट कभी कभी ऐसे होता है कि नहीं दिखा रहा है, एंड यू हैव इन द एंड यू कैन शो, सो वो एरर देगा इनसफिशिएंट फंड करके। सो हियर integration testing is working correctly. So what is the primary goal of integration testing? Why we have to do integration? So here you have to check the system's behavior, overall systems, not only a specific module, single unit or module you have done. यहाँ पे इंटीग्रेशन में जो प्रॉब्लम्स आते हैं दैट यू हैव टू रिजॉल्व हियर, बिकॉज कंपोनेंट टेस्टिंग इज डन, यूनिट टेस्टिंग इज डन, सो यूनिट लेवल प्रॉब्लम्स you have resolved at unit testing. Component level problems, matlab overall functionality of that program or of that module you have checked. So if there are any problems, you have resolved that. So now in integration testing, you have to resolve the problems related to integration. मतलब यहाँ से वैल्यू वहां पास हो रही है क्या, एंड वहां पे एक्सेप्ट हो रही है क्या? मतलब पाइपलाइन कैसे, यहाँ से पानी भेजा तो उधर जाना ही चाहिए, एंड उधर से वापस भेजा तो वहां से यहाँ आना चाहिए. So this integration, the pipeline should be clear, value should be passed correctly. So you can say that integration is done properly. Link is established properly, we can say. So here same thing applies. So the major focus of integration testing is to verify interaction between various software components and detect interface defects. मतलब यहाँ पे जो defects आपको मिलेंगे वो इंटरफेस रिलेटेड, मतलब जो बीच वाला पार्ट है, इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, उसमें जो डिफेक्ट आएंगे वही आएंगे. मतलब यहाँ से वैल्यू पास हो रही है करेक्टली, बट वहां पे फेच नहीं हो रही है, वहां पे डिस्प्ले गलत हो रही है. सो दोज थिंग्स विल बी रिजॉल्व्ड इन इंटीग्रेशन टेस्टिंग. So there are different approaches of integration testing. So like I mentioned you, big bang, top down approach, bottom up approach, or sorry, critical part first. So ये 4 approaches है. So उसमें से कौन सा approach use follow करते हैं, ये high level design, low level design में define होता है. So the best way to start integration test with those interfaces that are expected to cause more problems, जिसमें ज्यादा डिफेक्ट आने का चांसेस है, वो प्रॉब्लम पहले ले लो, वो एरिया पहले ले लो एंड टेस्ट इट. So this will uncover major defects early in the integration phase. मतलब जितने जल्दी हो सके उतने problems आपको मिलेंगे, फिर you can resolve that and fix that. And this type of testing correlates to the high level design of SDLC in V model. So we have seen that in SDLC V model, so you can correlate this integration testing with high level design. Once this is done, integration testing is done, you can go ahead with which type of testing?
system testing. So here, this is the fourth and the final round of testing. What input you provide, the process will happen based on the instructions, based on the requirements, and you will receive the output. So if you see the diagram here, so here if you see requirements. So for this phase, you can refer requirement document, right? So in requirement document, what you have mentioned, you can refer that. So here, input you provide, as per the requirement, you can provide the input, you will receive the output. And the event, what you have written, or event means the code, functionality, how you have written, as per your requirement, development team has written the events or programs to provide specified output. Okay. So system testing will check whether the output is as per my expectation. So this is the end-to-end testing we can perform here, functional and non-functional as well. So once the application is stable, you can say, go ahead and perform this functional testing. So once system is stable, once everything is working correctly, then you can start this kind of a testing. Here, once you know that system is stable, you can go ahead and perform performance testing, security testing, compatibility testing. You can perform these kind of a testing after system testing is done, or at least you understand the system is stable. The primary goal of system testing is to make sure that end-to-end business flows, matlab, right from the beginning, log in to log out, everything should work properly. So all the modules should work as per the expectation. Okay. Then here, what happens, because this is the system testing. So testers are testing this activity. Testers can execute the code and make sure the output is received as per system requirement document, SRS document. So here, this is done, this type of testing is done in a controlled test environment. Right? Control system like environment means what? Nobody can go and modify some things on that environment. Developers should not touch that environment. ठीक है? ये समझा क्या? System testing phase? No, ma'am. ये end-to-end testing, end-to-end business flow क्या है? नहीं समझ. हाँ. Suppose आपको कौन सा एग्जांपल लेते हैं? टिकट बुकिंग या जीपे का एग्जांपल लेते हैं. आपको आपके लिए आपको मुझे पैसा देना है. सपोज एग्जांपल, आपके पास नया फोन लाया है, अपने रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं किया है, आपको राइट फ्रॉम द बिगिनिंग सब एक्टिविटीज करने. व्हाट यू विल डू? फर्स्ट यू विल इंसर्ट अ कार्ड इनटू मोबाइल, you will take a backup of existing phone and restore that backup on a new phone, right? ये activity करोगे first? Yes, ma'am. हाँ. So ये होने के बाद what you will do? You can install the application from Play Store. GPay आपको करना है तो GPay Play Store से install करके ले लोगे, right? So वो install होने के बाद you can verify that my contact number is available in your contact list, right? So you can consider my contact number, then add that. So you can transfer money. You can select option transfer money, and if you select that, you can transfer to whom, right?
to you can select or type number and say pay. Then it will ask you enter a pin and send, right? ऐसे ही होगा ना? क्या होगा फ्लो? अलग होगा कुछ? No. एंड देन उसके बाद जब तुम पे करोगे तो क्या होगा? तुम्हें दिखते समय वेट करके वो मैसेज आएगा कि दिस मच अमाउंट इज ट्रांसफर्ड और पेड टू द अनदर पर्सन. समझा? तुम्हें भी मैसेज आता है, उसको भी मैसेज आता है कि तुम्हारे यहाँ से कट हो गए, उसके अकाउंट में ऐड हो गए. समझा? Yes, ma'am. एंड ये जो है ये एंड टू एंड फ्लो हो गया कि पूरा फ्लो स्टार्ट टू एंड तक. एंड उसमें और एक चीज चेक करना रहता है कि ये सिक्योर है क्या, मतलब तुम पैसा जो डाल रहे हो वो प्रॉपर अकाउंट से जा रहा है क्या. करेक्ट? यू वेरीफाई दैट. मतलब डेटाबेस बैंक अकाउंट में जाके भी चेक करते हो ना, मेरे अकाउंट से ही डिडक्ट हुए हैं क्या, या फिर मेरे अकाउंट में ही ऐड हुए हैं क्या. यू कैन चेक द हिस्ट्री आल्सो, राइट? सो दिस इज डेटाबेस टेस्टिंग. सो अकाउंट में जाके चेक करते हो. देन उसके बाद कितने मिनट में हुआ, कितना, अगर टाइम लगा तो क्यों टाइम लगा. सो ये भी परफॉर्मेंस आता है. सिक्योरिटी हो गया, परफॉर्मेंस हो गया. डेटाबेस में जाके भी चेक करते हो. अगर सिक्योर है तो ही आप करते हो ना पेमेंट. अगर वो सिक्योर नहीं है तो पेमेंट करोगे क्या? सॉरी, नहीं करेगी पेमेंट. नहीं करेंगे. सो ये जो है अदर थिंग्स, ये भी सिस्टम टेस्टिंग में आता है. नॉन फंक्शनल. फंक्शनल मतलब जो फंक्शनैलिटी है उसके अकॉर्डिंगली वर्क होना चाहिए. नॉन फंक्शनल मतलब अदर एस्पेक्ट, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, कंपैटिबिलिटी, डेटाबेस, ये सारा चीज जो है ये सारा नॉन फंक्शनल में आता है. टेस्टिंग मतलब फंक्शनैलिटी शुड वर्क एज इट इज. इतना समझा? एंड इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट्स देखने जरूरत है. सिस्टम रिक्वायरमेंट, बिजनेस रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट. बिजनेस रिक्वायरमेंट से सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट बनाया जाता है. एंड इसमें why it requires, this is the controlled environment. Why you require controlled environment? ये वाला, ये point, it requires controlled test environment because nobody should touch the environment. अगर तुमने यहाँ से कुछ किया एंड पीछे से डेटाबेस में जाके कोई चेंज कर रहा है वैल्यूज, तो क्या होगा? कुछ आपको करेक्ट रिजल्ट्स मिलेंगे क्या? No. So for that reason nobody should enter or access this environment unless and until you say that. So here that's why we have considered that this controlled environment or system testing should be done in a production equivalent environment. मतलब nobody has access. तुम्हारे फोन को जैसे पिन डाल के ही एक्सेस किया जा सकता है या पासवर्ड प्रॉपर वे से ही अनलॉक किया जा सकता है, वैसे ही ये सिस्टम को प्रॉपर ऑथराइजेशन करके ही लॉग इन करके देन यू कैन परफॉर्म दीज एक्टिविटीज. ठीक है? इतना समझा क्या? मैं क्यों भी पूछ रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थिंग है. सिस्टम टेस्टिंग आपको करना है आगे जाके. बाकी सारा चीज कुछ नहीं इतना फर्क पड़ने वाला है, बट सिस्टम टेस्टिंग यू हैव टू डू. You have to write, means here when you can perform the system testing, you receive the application, you receive that build is deployed on a test environment, then you can perform smoke test. After smoke test you can start with integration testing and then component testing. ठीक है? ये इतना समझा? A bounce back.
नहीं सच में बोलो, ये नहीं समझाए तो मैं आई कैन वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक बार फिर से। हाँ ठीक है। सो हियर व्हेन यू से सिस्टम टेस्टिंग मतलब एवरीथिंग इज डन, यूनिट टेस्टिंग इज डन, देन उसके बाद कंपोनेंट हो गया, उसके बाद कंपोनेंट इंटीग्रेशन हो गया, all components are working fine, then you can integrate that every component plus some external if required, you can add that and then it becomes a system, overall system, right? So ये system test करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? जो टेस्ट केसेस लिखे हैं फंक्शनल एज पर द रिक्वायरमेंट्स, system requirement specification, you have written the test cases and you have to test that test cases as per the requirement. It is, if it is working fine, then you can say that we are good to release the software. So here, how we can say that? By testing functional flows and non-functional flows, we can say that we are good to go. Okay. So here, in this system testing, you can perform functional testing. So functional में positive, non-positive, मतलब negative. So a plus a equal to 10. A plus b equal to, sorry, c. So a is a 10, b is a 10. Then what is the value of c? Obviously 20. So if I provide 10, a equal to 10, b equal to minus 10, then what should be the value? 0. 0. So you know that. But if I enter 10 and minus 0 or minus 5, 10 and minus 5 डाला मैंने, so 10 minus 5 आएगा. But वो minus 5 कैसे ले सकता है value? Whether that value, the another field, if that field accepts value as a values, so it should accept. अगर मैंने name लिया है, मेरा नाम लिया है, तो name should be alphabets only, not, it should not accept special characters, numbers in between, right? So ये overall system में कहीं पे भी name field है, तो at that point it should not accept some values, special characters and numbers. Pooja, you are saying something? No, ma'am. So यहाँ पे end to end flows जो है वो चेक करने हैं. जैसे अगर आपको बैंक का एग्जांपल लिया, आप एटीएम कार्ड में जाते हो, तो आपका एटीएम कार्ड मिलने के बाद आपको पिन भी दिया जाता है, राइट? डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो भी आप लेते हो तो उसके साथ उसका पिन रहता है, करेक्ट या नहीं? यस मैम. तो वो लेके ही, मतलब आपको एक तो रीड करके बाय हार्ट करना है या फिर वो लिख के कहीं पे आप हाथ पे लेके जाओगे. You enter a card into debit card into any ATM machine, जहाँ पे ATM मशीन होता है, आप जाके वो कार्ड इंसर्ट करते हो. What all activities you do? किया है ना किसी ने या नहीं किया किसी ने? किया है मैम. किया है ना, तो कैसे किया है? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल हम कार्ड लेके जाते हैं, फिर मशीन में वो कार्ड को डालते हैं. देन उसके बाद वहां से लाइक वो पूछता है कि क्या करना है, विड्रॉल करना है वगैरह. देन अकॉर्डिंगली फिर अपने को नेक्स्ट करना रहता है, फिर अमाउंट डालने का, देन सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एंड देन जो भी अमाउंट है वो डालने के बाद फिर वो प्रोसेस होता है, अगर पिन वगैरह वेरीफाई होने के बाद. So यहाँ पे it gives you instructions to proceed further, right? क्या आगे करना है आपको वो उधर दिखाई देता है, ये उसके बाद ही आपको पता चलता है आगे क्या करना है. So you are taking a card. Card is an external device, right? External thing. उसके मशीन में है क्या वो कार्ड पहले से? नो मैम. So you are taking that external thing
to that machine and you are inserting that card into the machine. Are you keeping that much in the machine? Initially, obviously, yes. But nowadays, you are not entering, you are not keeping that card in the machine. You swipe it, remove it. It will ask you, prompt you that enter a valid PIN, personal identification number. So you enter a PIN, then that information is sent to the bank server, which is located at the bank, right? So bank में जाके वो verify होता है कि whether this card has this PIN, and वो भी encrypted form में रहता है. नहीं तो कोई भी देख के वो बैंक वाले लोग तो सबसे ज्यादा फ्रॉड करेंगे ना. तो वो क्या करता है, वो चेक करता है कि बैंक में ये कार्ड स्वाइप होने के बाद ये कार्ड के लिए ये पिन वैलिड है या नहीं है. इफ इट इज अ वैलिड देन इट सेंड्स, वो मेनू दिखाता है. अगर वो पिन वैलिड इनवैलिड है, मैच नहीं हुआ बैंक के रिकॉर्ड के साथ, जो पिन था इसके साथ मैच नहीं हुआ, तो इट विल नॉट अलाउ यू टू प्रोसीड फर्दर. आपको वो आगे जाने नहीं देगा. यू डिक्लाइन द ट्रांजैक्शन. 3 times अलाउ करेगा, चेक करो, अदरवाइज लॉक करके रखेगा. करता है ना? Yes, ma'am. सो ये उसका एंड टू एंड फ्लो में पॉजिटिव, निगेटिव, सिक्योरिटी रीजन सब कुछ टेस्ट होता है यहाँ पे. एंड अगर वो गलत पास पिन डालने के बाद भी आपको अलाउ कर रहा है, दैट मीन्स देयर सिक्योरिटी सिस्टम इज नॉट up to the mark, or it is not working correctly. You cannot trust that bank. You can immediately close that account, right? So, and उसके बाद क्या होता है, अगर वैलिड है, आपकी एंट्री होती है, तो you can withdraw money. तुम्हारे अकाउंट में वो एंट्री जाती है कि वहां पे माइनस करो, right? Then it will show you what is the balance. एंड वो प्रिंट करेगा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री. सो ये ट्रांजैक्शन किया, इतना अमाउंट विड्रॉ किया, कौन से टाइम, कौन सी डेट, कौन से लोकेशन, ऑल द थिंग्स विल बी डन. एंड देन व्हेन यू गेट योर पासबुक अपडेटेड फ्रॉम द बैंक, यू कैन सी दैट एंट्रीज इन द पासबुक. करेक्ट? एटीएम से किया था, बट पासबुक में भी वो एंट्री आती है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्रिंटिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्टिविटीज. मतलब ये सारा चीज आपको करके देखना है. इफ यू आर डेवलपिंग दैट सिस्टम, देन यू हैव टू टेस्ट ऑल द थिंग्स बाय योर ओन. एंड once everything is working fine, you can say that system testing is done. And you have seen that in a yesterday test plan, exit criteria. If it meets the exit criteria, then you are saying testing is completed. Pass rate is 95%. All major critical defects are fixed. Then test lead or test manager can say that we are ready for UAT, user acceptance testing. So you can say that after system testing, means in system testing you can test functional as well as non-functional behavior of the application, and you can say that we are ready to go for user acceptance testing. Okay? Yes. अभी समझा? Yes, ma'am. आगे आएगा तब पता चलेगा और भी. And once test lead confirms that system testing is done correctly and that test report, the summary report is approved by all the stakeholders, we can say that we are ready for deployment. Then your customer team, they will come to premises development, where the development is done. So on that environment, they will test the application as per their test requirements, basically STS, system test requirements. So based on that requirements, the team will verify the results of the system. So here
acceptance testing, there are two types of acceptance testing. One is alpha and another is a beta. Alpha is carried out at development side, whereas beta is carried out at customer side or user side, or we can call it as a field testing. Matlab, you can deploy the application on customer side and test it. Okay. So here, the goal of acceptance testing is to establish a confidence of the user or the customer in the system. मतलब हमने किया है, but उनको कैसे पता चलेगा कि how they are they comfortable, are they comfortable in accessing the application with the system. ठीक है. So here, why we have to do this activity? मतलब हमने कुछ suppose मैंने एक मशीन washing machine लिया हमने, right? वॉशिंग मशीन लेने के बाद वो घर पे डिलीवर करते, उसके बाद डेमो देते हैं, राइट? देते हैं ना? तो डेमो होने के बाद यू ट्राई टू एक्सेस दैट थिंग कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है. मुझे अगर डे टू डे के कपड़े धोने हैं तो क्या करोगे, कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, क्या करोगे. सो ये जो चीज हमें एक्सप्लेन करते हैं वो, दे गिव अस सम काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग टू यू and you can start accessing that machine for your daily use, for your requirement, basically we can say. Same thing applies here. So the application, when you develop that application, you give a demo or you give a training to the customer. They will use that system as per their requirement. The business scenarios, उनका जो business day-to-day business scenarios है, they will consider that scenario. They will create a list of that scenarios and test it in your development site, as well as after deployment of that into their site, they will do that activity. मतलब ये जो Amazon है, Flipkart है, ये डायरेक्टली ऐसे सिस्टम डेवलप करके टेस्ट करने को दिया नहीं है. उन्होंने भी पहले उनका टेस्टिंग किया है, पहले लोकली किया, फिर वो प्री प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे किया, देन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे किया, एंड देन इट इज रेडी फॉर इट यूजर्स. सो ये वैसे ही यहाँ पे अल्फा टेस्टिंग जहाँ पे डेवलप होता है वहां पे टेस्ट होता है, उसके बाद फील्ड टेस्टिंग मतलब एक्चुअल लाइव टेस्टिंग करते हैं. एंड हियर दे इफ देयर आर any issues, we have to fix that issues and provide the solutions as urgent as possible. And once UAT is done, we can say that we are done with the testing. So here mainly focus business scenarios hote hain, real time scenarios hote hain. So it focuses mainly on the functionality testing, whereas the business user validates the fitness for the use of the system. मतलब अगर आज मुझे रिजल्ट, ये भी एक अच्छा सिनेरियो याद आया मुझे. सो इन वी मॉडल I can tell you that later. So in V model, the testing coincides with the business requirement specification. हाँ, एक रिजल्ट की जो वेबसाइट रहती है, 10th and 12th के रिजल्ट रहते हैं, आपने देखा होगा कभी कभी पहले क्रैश होती थी वेबसाइट, याद है? अभी भी होता है कभी कभी, बट अभी थोड़ा सुधर गई है उनकी सिस्टम, है ना? Yes, ma'am. तो क्यों ऐसे उनका पहले क्यों नहीं वो ऐसे क्यों हुआ होगा, कुछ आपका ये है? बहुत सारे यूजर्स एट द सेम टाइम ट्राई करते तो सर्वर लोड की वजह से. करेक्ट. सो यहाँ पे उन्होंने लोड कितना वो सर्वर ले सकता है वो टेस्ट ही नहीं किया होगा. करेक्ट. सो यहाँ पे सिस्टम टेस्टिंग के उनकी क्या फिटनेस फॉर यूज जो है यहाँ पे वो उनका उन्होंने उतना कंसिडर ही नहीं किया होगा. जितने लोग 12th के लिए अप्लाई करते उतने लोग एट अ टाइम लॉग इन करके चेक करते, राइट? उससे भी ज्यादा, क्योंकि कई बच्चों के पेरेंट्स भी अलग से चेक करते, बच्चे भी अलग से चेक करते हैं. सो हियर दे नीड टू कंसिडर और कीप दैट इन माइंड दैट
if there are 10 lakhs of users, students are appearing for the exam, then there might be a chances where 12 lakhs or 13 lakhs to login will be done at the same time accessing that application, right? So they have to think from that perspective. वो server की capacity इतनी होनी चाहिए कि they can accept or handle that kind of a load at the same time. So ये जो है, and अगर everything works fine, then user is happy. They say that this application is developed as per our requirement and it is working fine. Then we can close the testing. And we can start using that system for day-to-day production, day-to-day life. Okay, so these are the 5 levels of testing. First is unit testing. Who performs unit testing? Some testers. Developer. Second is a component testing. Who performs component testing? Tester and developer. Mainly testers, but Testers. with the help of developers, because something is some settings are required. I mean, help is required, then they will provide, but testers can also do that. And here main scope is more than unit testing and less than system testing, basically. The overall system is not ready at this point of time. So what is the related phase in SDLC, low level design. So component testing के लिए low level design, or that document you have to refer. Integration testing में two things, component integration testing and system integration testing. So here you can do the testing and you can check the interface related issues, right? You have to check the interaction between two components, or integration between the system should work properly. Then fourth is a system testing. So here you can do the end-to-end testing, functional as well as non-functional testing, and you can check the system requirement specification. So based on requirements, system requirement specifications, you can receive the output. And then last but not, this testing is done. If everything is working fine, then we can say that system is stable. We can run, go ahead for UAT. So in UAT, user acceptance testing, there are two types, alpha and beta. Alpha is done at development side and beta is done at field side or at user's location. मतलब जहाँ पे customer site और field site field testing we can do. And user side मतलब जो end user है उसके यहाँ पे system deploy होता है and वहाँ पे test होता है. And it is correlates to the business requirement specifications from the V model, basically verification model. So here you can see once alpha and beta testing is done, we can say that system is ready for other users as well. Okay, so these are the 5 levels of testing. Okay, यहाँ पे कुछ किसी को डाउट है तो पूछ लो एक बार. क्लियर है? Yes, ma'am. So इसके बाद आता है इंटीग्रेशन के अप्रोचेस. वी हैव सीन दैट हाउ वी कैन इंटीग्रेट, कहाँ से स्टार्ट करना है टॉप. सो देयर आर अप्रोचेस कि कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है. कई जगह डिपेंडेंसी होती है. सो वो ये कौन बताता है, अप्रोच कौन बताता है. सो एट द टाइम ऑफ डिजाइन the technical architects will tell you, or the developers will tell you, senior developers,
कि which approach they are going to use in the integration testing, for integration. So we have to think from that thing कि which approach we have to use for integration testing. And why we have to do this integration? Because to reduce or the number of defects during integration. So integration testing uncovers defects by focusing on interfaces between small groups or components, groups of components. मतलब जो हमने components देखे small, so ये components integrate करके test करना है. उसमें जो भी कुछ problems आएंगे वो resolve करने हैं हमें integrate करके. So it begins by integrating and testing 2 or more components. If no new defects are found, then more components are added to the groups. मतलब पहले ये approach के accordingly एक groups लिया जाता है and then it adds more components. So the order of integration is on integrating and testing the components influence the effort and testing strategy. जैसे वो developers develop करेंगे कौन सी method they use करने वाले. So depending upon that, we have to decide the test strategy. क्योंकि वो कौन सा पहले डेवलप करेंगे वो ही हमें टेस्ट करना पड़ेगा ना. अगर वो डेवलप नहीं करेंगे तो हम लोग टेस्ट क्या करेंगे, राइट? सो देयर आर 4 अप्रोचेस. टॉप डाउन, नेम सजेस्ट कि क्या है, कौन सा मेथड यूज करें. टॉप डाउन मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू टॉप मॉड्यूल, देन डाउन मॉड्यूल. Bottom up, critical part first, and big bang. So these are the 4 approaches they are using. Correct? So we'll see one by one. Top down approach. So here top module are developed and integrated on priority, and slowly the lower modules are developed. Okay. So lower modules are integrated one by one. मतलब पहले क्या करेंगे? I can show you here. Oh my God. So if you consider अगर ये एक एग्जांपल लिया हमने कि ठीक है. सो ये एक मॉड्यूल है फर्स्ट. ये थर्ड. सो यहाँ पे हमने 3 मॉड्यूल्स डेवलप करने हैं. एक्चुअली वहां पे है, बट ये इसमें टॉप डाउन अप्रोच में क्या होगा, ये जो फर्स्ट मॉड्यूल है विच विल बी डेवलप्ड फर्स्ट, देन फॉर लोअर मॉड्यूल्स वी कैन से, एक मिनट, हाँ यहाँ पे दिखा देते हैं. सो यहाँ पे व्हाट दे कैन डू, लोअर मॉड्यूल्स के लिए वी कैन राइट सम सिस्टम कोड. कि क्या लिखेंगे? सो दे विल राइट सम कोड. Lower modules will be integrated one by one. In this scenario, lower modules may not be ready for the first for a testing. So for that, they will write a stub. Stub is nothing but a code, some sample code, which can be integrated later. But here, to test the top module, we can write the stubs. So example में कैसे consider किया, यहाँ पे आगे है क्या example दिया है. हाँ. So module 1, module 2, module 3, 4, 5, 6 ऐसे इतने सारे modules लगने वाले. So how can you go ahead and do the testing? So पहले module 1 रहेगा, but module 2 and module 3 at a time नहीं होने वाले हैं. तो what they will write? They will write some code.
where it pass a value, मतलब मैंने बैंक में कार्ड डाला, तो कार्ड डालने के बाद कार्ड नंबर, वो कार्ड नंबर एंड पिन जो है वो बैंक सर्वर को जाएगी, वो वैलिडेट होके आएगी। तो यहाँ पे मेन थिंग क्या है, कार्ड नंबर पास होना एंड पिन पास होना एंड रिस्पॉन्स आना। सो ऑल दीज थिंग्स यू कैन राइट इन ए सैम्पल कोड, जस्ट छोटा 4-5 जितना भी लगेगा उतना कोड लिख के वो यूज करना है। बट इफ module 1 is working fine, we can remove module 2, what stuff we have written, and we will write actual code for module 2. Same thing applies module 3. Then यहाँ पे module 2 के लिए हमें कोड लिखेंगे and module 4 के लिए we will write a stub. Stub is nothing but a sample code basically. So here you can see the example. Online shopping है तो checkout module है, मतलब add to cart किया then checkout करना है. So checkout module is the top module which calls billing and print invoice module. So checkout जो है, that checkout module is the top module, and you can write a stub. Stub is nothing but a sample, a small piece of code. You can write it for billing and print invoice module. So ये दोनों के लिए कोड अभी रेडी नहीं है, but you can write a sample code and test it with that sample code. So here you can see that जैसे ही उसका कोड लिखा जाएगा, you can replace that stub with actual code. Stub is nothing but a sample code. What is a stub here? Stubs can be referred as a code snippet which accepts the inputs or request from the top module and returns the result or response. जैसे हम लोग temporary, अगर हम नहीं है तो what we can alternative arrangement we can do, you can divert, you can do this and perform this task. अगर हम day to day काम करने के लिए जो लोग आते हैं वो नहीं है तो what you can do, you can get these things done by contractors, right? So that contractors will perform the same thing, but whether they will do as your employees will do, no, they can do it for temporary basis. Once your employees are back, you can remove that contractors. Same thing applies here. Stubs can be referred as a code snippet which accepts input or request from the top module and returns the results or response. मतलब जो भी आपको रिप्लाई देना है वो उधर आएगा. So even though lower modules are not ready, we can test the integration with the top module. मतलब अगर तब तक इसमें कुछ प्रॉब्लम है टॉप मॉड्यूल में तो वो यहाँ पे आइडेंटिफाई होंगे and will fix that problem. Correct? So stub is nothing but a temporary code which is written by the developers, and they will provide some, you can pass some input and they will send some output. समझा क्या ये point? So here, in this approach, top modules are developed and integrated first. क्यों top module पहले किया? कि that is a critical one, so you can do that first. So वो पहले किया. Login functionality consider किया. तो login भी priority पे होना चाहिए, but login से भी you can do that. Login से आगे कुछ dependency है क्या? वो बाद में भी कर सकते हो. So यहाँ पे पहले क्या किया? चेकआउट किया, मतलब मैंने ऐड टू कार्ट करके रखा, चेकआउट किया. सो दैट इज माय फर्स्ट एक्टिविटी. चेकआउट होने के बाद व्हाट वी कैन डू, बिलिंग एंड बिल भी जनरेट होना चाहिए, उसके बाद इनवॉइस भी जनरेट होना चाहिए, प्रिंट इनवॉइस, क्योंकि वो डिस्पैच होगा तो उसके साथ ये जाना चाहिए. सो दैट इज द रीजन हियर वी हैव डेवलप्ड checkout module on priority, and then we can write a code snippet for
other bottom modules can be written as a stubs. And once that stubs are tested with that stub, and once that is stable, we can write code for the bottom modules, right? So here we can start with the top module, then we can easily go and develop that, and then one by one we can replace the code with the actual development. ठीक है, समझा क्या अभी क्या नहीं? थोड़ा डिफिकल्ट मतलब आपको लगा होगा क्योंकि आपको एक तक वरून खाली जायचं किंवा खालून वर यायचं, कुठला तरी एक वेनी वन वे यू हैव टू फॉलो. आइदर गो फ्रॉम अप, आगे ऊपर से नीचे आना है तो ऊपर से नीचे आने के लिए डायरेक्टली आ नहीं सकते ना, ऊपर से नीचे कुछ तो भेजना है, तो भेजने के बाद उसके आउटपुट भी आपको मिलना है, तो क्या करेंगे, तो कुछ तो लिखेंगे कि आप कोई तो टेम्पररी वहां पे असाइन कर देंगे. सो उसके बेसिस पे आपको वो रिजल्ट मिलता है. सो वो रिजल्ट मिलने के बाद वो रिजल्ट में सेंड एंड रिसीव, दैट फंक्शनैलिटी इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड. दैट मीन्स top module is working fine. So you can write the validations and other things and actual code for the lower module. You can develop it later. So that will be again working as expected. So that means end-to-end flow for sending and receiving for these two modules is working fine. Then you can replace this code stub and write actual code over there. Okay. And once it is ready, you can replace that, remove that stub, and you can write actual code. ऐसे एक एक करते 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 top to bottom oral system is ready. Then you can start system testing. Are you with me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कुछ आंसर नहीं आया है या नहीं है, कुछ सो गए सब लोग. ठीक है, सो ये टॉप डाउन अप्रोच है. सिमिलरली बॉटम अप भी अप्रोच है. यहाँ पे अगर आपने एग्जांपल देखा तो आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा. पहले ये जो है मॉड्यूल 1 और कंपोनेंट 1, उसके लिए मैंने स्टब लिखा है. बट आफ्टर दैट व्हाट वी हैव डन, कंपोनेंट 2 का कोड रेडी है, 3 का कोड रेडी है. यू कैन रिमूव दिस स्टब, सॉरी, you can remove this stub and replace that with components code. Actually component का कोड लिखा है वो यहाँ पे आएगा. फिर बाद में ये components रेडी है, तो उसके बाद नीचे वाले के लिए क्या you can use stub. मैम ये स्टब कहाँ से आता है, मतलब कहाँ से लेता है? क्या कहाँ से लेता है? स्टब. Stub is nothing but a code. डेवलपर ही लिखते हैं. ओके मैम. सैंपल कोड है, थोड़ा छोटा रहेगा. एक्चुअली कोड कैसे रहेगा, बहुत बड़ा रहता है ना. तो यहाँ पे जस्ट एक्सेप्ट करना है एंड रिटर्न करना है. यहाँ पे देखोगे ना तो पता चलेगा. स्टब कैन बी रेफर्ड एज अ कोड स्निपेट. स्निपेट मतलब सैंपल कोड है. हाँ. सो विच एक्सेस द इनपुट एंड सेंड द रिस्पॉन्स. मतलब यहाँ से जस्ट टू एंड फ्रो कि मैंने यहाँ पे ये वैल्यू दी तो उसका रिप्लाई देना है. मैंने पूछा आपको क्वेश्चन तो आपने आंसर देना है. वैसे ही यहाँ पे उतना ही है. एंड जब आप रेडी होगे तो एक्चुअल कोड रहेगा यहाँ पे. एंड देन डेवलपर विल राइट द कोड फॉर दिस कंपोनेंट. मतलब इनिशियली कैसे रहता है कि पूरा सिस्टम रेडी रहता है, तो क्या करोगे, तो पूरा सिस्टम लिखने के बाद टेस्ट करोगे तो वो बहुत टाइम जाता है. तो यू कैन, ये हो गया पहले उसका टेस्टिंग करो, ये हो गया इसका टेस्टिंग करो, ये हो गया इसका टेस्टिंग करो. ऐसे करते करते एक एक करके डेवलप करते जाते हैं. सो दैट टाइम बचता है कि बाद में अगर मैंने चेक किया 4th कंपोनेंट हो गया एंड कंपोनेंट 4 में टेस्ट करते समय मुझे पता चला कि कंपोनेंट 1 में ही प्रॉब्लम है, तो फिर मतलब प्रॉब्लम आया तो कहाँ पे, कंपोनेंट 2 में है, 1 में है, 3 में है, कहाँ प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई करने में बहुत टाइम जाता है. सो इफ यू डू दिस अप्रोच, इंटीग्रेशन अप्रोच, टॉप डाउन बॉटम अप, ये इसमें से कौन सा भी लिया तो आपको पता चलता है कि पहले ये इसमें प्रॉब्लम नहीं है. कंपोनेंट 1 इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड, कंपोनेंट 2 भी वर्किंग एज एक्सपेक्टेड है. तो प्रॉब्लम कहाँ है, तो यहाँ से सेंड एंड रिसीव इसमें प्रॉब्लम है. सो वी कैन चेक ओनली इंटीग्रेशन पार्ट एंड दैट विल save the developer's time as well as tester's time.
सो इसीलिए ये अप्रोच जनरली यूज करते हैं. ठीक है. मैम मतलब ये स्टब में जो भी कोड रहेगा वो मतलब फॉर अ व्हाइल या टेम्पररी रहेगा ना? temporary. And then they can use that while creating a code for this another component. They can refer that or they can use that, but it is not a permanent code. It is a sample and temporary code which can be removed after the actual code is ready. ओके मैम. सो नेम एक दिया है, कुछ तो देना है, तो स्टब ये है उसके लिए कोड स्निपेट. सिमिलरली इफ यू गो फॉर द बॉटम अप अप्रोच, आई कैन शो यू दैट बॉटम अप अप्रोच. सो यहाँ पे सॉरी, बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है, बॉटम वाला मॉड्यूल जो है, यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं आपको, फिर पता चलेगा. ये जो मॉड्यूल्स है, सो वो मॉड्यूल्स पहले लिखे जाते हैं, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3. सो बॉटम वाले मॉड्यूल्स पहले लिखे जाएंगे, फिर अप टॉप वाले मॉड्यूल्स लिखे जाते हैं. तो टॉप वाले मॉड्यूल के लिए वो ड्राइवर लिखते हैं, बिकॉज दैट ड्राइव्स द बॉटम मॉड्यूल्स. यहाँ पे भी सेम थिंग होता है. दिस इज अ डमी प्रोग्राम और अ फंक्शन विच कॉल्स द which calls the lower modules basically. We can see that, or should we complete this? करूँ क्या कंप्लीट? ये हो जाएगा 5-10 मिनट में. नो मैम, नेक्स्ट लेक्चर में लो. नहीं, सिमिलर है इसीलिए मैं बोल रही थी, क्योंकि जैसे टॉप डाउन, टॉप अपने देखा टॉप डाउन, तो बॉटम अप उसका रिवर्स भी. बट यहाँ पे क्या होता है, ड्राइवर्स लिखे जाते हैं. पहले इसमें क्या था, स्टब था. स्टब इज अ सैंपल स्निपेट, कोड स्निपेट. इसमें भी कोड ही रहता है, कोड स्निपेट डमी प्रोग्राम बोलते हैं हम लोग. सो डमी प्रोग्राम रहता है, सो विच कॉल्स which is used to call the functions of the lower modules basically. ड्राइव करता है, ठीक है. बट हम लोग we will discuss that in the next lecture, no issues. थोड़ा heavy नहीं होना चाहिए, because we have discussed everything related to levels of testing, so that is very important. You can remember those things very well. ठीक है. I'll stop the recording as well as sharing.